हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे भॉल के कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में। तो भॉल लास्ट 2-4 दिन से बहुत सारा मेल कर रहा है, क्या क्या हो रहा है वहाँ पर घटना, और कैसे कैसे सिंगापुर में उन्होंने जो मॉरेटोरियम एप्लीकेशन सबमिट किया कोर्ट पे, तो उसका क्या हुआ। तो डिटेल्स हम बात करेंगे। यस्टरडे क्या हुआ था, उनका एक लाइव वेबिनार था जहाँ पर मैंने अपना देखा, वहाँ पर शो देखा था उनका। तो वहाँ पर उन लोग क्या कहा, तो उसका डिटेल्स हम आज यहाँ पर देखेंगे। तो बने रहे मेरे वीडियो में। तो दर्शन भतीजा जो उसका सीईओ है, उसने क्या कहा, तो उनका जो फ्यूचर प्लान क्या है, तो ये डिटेल्स हम बात करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है वॉल के बारे में, जो वॉल के कस्टमर है इंक्लूडिंग मी। तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स गो टू माई स्क्रीन एंड आई विल शो यू what Bolt says and Darshan Bhattacharya and his team। तो यहाँ पर है ये टेबल ऑफ कंटेंट, जहाँ पर जो करंट सिचुएशन है बॉल्ट का वो यहाँ पर बताया गया है, और रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगा, कम्युनिकेशन कैसे किया जा रहा है जो कस्टमर से, जो क्रेडिटर्स है। उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स है क्रेडिटर्स का, वो जितना भी क्वेश्चन आंसर्स है वो सब यहाँ पर आंसर किया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिकली सेम सेम है, तो उसको मार्च करके एक ही क्वेश्चन में उन लोग सॉल्व किया था। तो ये लास्ट यस्टरडे हुआ था, तो सिंगापुर टाइम के हिसाब से 8:30 में हुआ था। तो ये बेसिकली 21 जुलाई को हुआ था 8:30 सिंगापुर टाइम में। तो क्या क्या था उसमें, जो करेंट सिचुएशन में, जैसे कि उन्होंने बैकग्राउंड दिया था कि भॉल अभी कितने कस्टमर बेस है, वहाँ पर लिखा है उन्होंने कि टोटल 2,50,000 कस्टमर्स अवेलेबल है करेंटली। तो मेनली उन लोग का सिंगापुर बेस्ड है एंड इंडिया एंड यूएसए। तो उसके बाद द ग्रुप सस्पेंड कस्टमर अकाउंट्स फ्रॉम ऑन 4 जुलाई। तो क्यों हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो घटना हुआ था सेल्सियस, जो 3 एरो और जो स्टेबल कॉइन था टेरा लूना, इसके बारे में जो कैस्केडिंग इफेक्ट हो उसके बाद में, तो इसके लिए उन्होंने ये ऑफ करके रखा था। तो उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा कि उन लोग नेक्सस से भी बात कर रहा है, जो 100% उन लोग एक्वायर करेंगे। तो करंट मार्केट इन्फॉर्मेशन के बारे बताया था कि क्या क्या हो रहा है अभी, क्योंकि मार्केट बहुत भड़ाला चल रहा है। उसके बाद लिक्विडिटी क्या है उनका, तो सिग्निफिकेंट प्रेशर ऑन लिक्विडिटी फ्रॉम 12 जून से उन लोग लिक्विडिटी का स्टार्ट हो गया था। तो देयर नेट जो विड्रॉल हो गया था उनका अराउंड 56 मिलियन, और उसके बाद डेली नेट विड्रॉल फॉर कस्टमर 1 to 8 मिलियन। तो इसीलिए बेसिकली उन लोग लिक्विडिटी ताकि बने रहे, इसलिए उन्होंने ये स्टॉप करके रखा था। ठीक है, तो नेट एसेट वैल्यू यहाँ पर लिखा है $70 मिलियन वॉल्ट, और लायबिलिटीज एसेट वैल्यू। उसके बाद जो मार्क टू मार्केट लॉस हुआ था उनका बीटीसी एथ और मैटिक पे एंड एक्सआरपी पे, इसलिए भी वॉल का, क्योंकि वॉल एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, क्या इन्वेस्टर से पैसा लेके किसी को और को लैंड करता है। तो एक बेसिकली उन्होंने एक जो एक बिजनेस फेलियर बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर कोई बहुत लोग बोला कि फ्रॉड है, फ्रॉड एक्चुअली नहीं है ये, क्योंकि फ्रॉड होने से क्या होता है कि ये पैसा लेके भाग जाता है। ये यहाँ पर इन लोग भाग नहीं जा रहा है, इन लोग खुद यहाँ पर बोल रहा है कि दर्शन भतीजा खुद ही बोल रहा है कि हम लोग वो मज़ा नहीं रखा था। मैं वो वीडियो आप इसके पे दे दूंगा, आप देख लेना दर्शन भतीजा क्या बोल रहा है। ठीक है, स्कोप ऑफ वर्क यहाँ पर दिखाया था क्या क्या होगा स्ट्रक्चरिंग के लिए, रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशंस। ठीक है, उसके बाद मॉनिटर ऑनगोइंग ऑपरेशंस, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरिंग, ये पूरा डिटेल्स है वहाँ पर। तो इसका एक लिंक भी उन लोग शेयर किया है वहाँ पर यूट्यूब में, आप जाके देख सकते हो वहाँ पर क्लियरली क्या कहा। तो मैंने जब उसको हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली हुआ क्या हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो कोर्ट का प्रोसेस कैसे होगा, फॉर्मल कोर्ट जो सिंगापुर बेस्ड में है, तो आप और हम जैसे जो क्रेडिटर है बेसिकली, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बेसिकली मॉरेटोरियम उन लोग अप्लाई किया था 30 डेज के लिए, अभी जाके वो बाहर भी सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये है डेट उनका सस्पेंशन ऑफ कस्टमर 4 जुलाई को हुआ था। 8 जुलाई को डिफाई पेमेंट्स ग्रांटेड एंड ऑटोमेटिक 30 डे कोर्ट मॉरेटोरियम ऑनगोइंग स्टिल है। 18 जुलाई को बेसिकली केस कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग हुआ था, और उसके बाद 25 जुलाई को होगा क्रेडिटर्स में फाइल एंड एफिडेविट ऑन कोर्ट जो पेंडिंग है।
27 जुलाई को होगा D5 पेमेंट्स टू फाइल द रिप्लाई एफिडेविट ऑन कोर्ट. 18 जुलाई को होगा all written submission to be filled in advance of the hearing, and 1st अगस्त को सिंगापुर कोर्ट हियरिंग फॉर मोरेटोरियम एप्लीकेशंस. तो ये है रजिस्ट्रेशन का पूरा स्टेप्स, क्या क्या प्रोसेस होगा यहाँ पर. उसके बाद कम्युनिकेशन कैसे किया, तो यहाँ पर मेनली एक फाइल सबमिशन हुआ था 27 जुलाई को. उसके बाद आप एक मेल आया था जहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करना पड़ा था क्योंकि आपको सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे मोरेटोरियम के लिए. तो ये है उसका डिटेल्स. ठीक है. उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है, मैं अभी इसका वीडियो यहाँ पर देख पा रहा हूँ आप. Event would very sharply cut that off and the business would cease to operate. And without the moratorium, as Darshan quite rightly pointed out, that would be very disruptive to the investor process and the discussions currently ongoing with Nexo. How would creditors redeem their funds under a successful restructuring? And would this be in crypto or fiat currency? Well, it's too early to say at this juncture, and there would need to be an assessment of all of the options available and also the market conditions before deciding whether to offer repayments to creditors in fiat or crypto, or when to lift the suspension on the customer account activities. It really depends on how investor discussions unfold and what ultimately is put into the restructuring plan. And along the way will be also listening to creditors and holding these forums so that we'll get a sense also of what the preferences are from creditors. There may be a preference simply to redeem in the denomination of the crypto or fiat held in the account, or there may be some other preference. So creditor preference can play into that as well. Let me step in here. Our preference is for folks to get back exactly the assets that they hold with us, and the deal that we're pushing will hopefully make that happen over time. And yeah, that's all I wanted to say. And will Volt prioritize a few creditors over others? Well, absolutely not in the process. That's a critical factor of the process. It's one of the slide that we've prepared up until and then maybe after this we can move on to some of the new questions we're seeing, is around the investor process at this moment. So hopefully this meeting ends on a fairly positive note. With the update on the Nexo deal, what is the update on the Nexo deal and when will the sale happen? So things are progressing along with Nexo. As a lot of you know, we made the announcement post the signing on the 5th of July. We have seen Nexo make significant steps towards the due diligence. They've hired local counsel. Their team has been doing a deep dive into the documents we've shared. We're doing rounds of questions and answers, and we're closely corresponding with their leadership. So all indications that I see lead me to feel very optimistic at this moment. I expect the transaction to take the full 60 days outlined in the term sheet, primarily because of the nature and size of the transaction and the business. There's just a lot of nuance that needs to be uncovered through the due diligence process, and it will take some time. So what is the purpose in allowing 60 days for due diligence in respect of the potential sale to Nexo? The purpose of any due diligence process is for the team to verify our internal documents, our assets and liabilities, our licensing applications, our employment agreements, and everything, right? When somebody is looking to strategically invest or buy a business, there's just a tremendous amount of legal, financial
deep dives that they need to do so that they're fully informed of the current position the business is in which they're investing or acquiring. And 60 days is not unusual for a transaction of this size. In fact, it's on the conservative end. But I expect us to push as hard as we can to ensure that we come to a conclusion, hopefully a very strong one, sooner rather than later. When did the 60 days period begin and when will it end? It began on the 5th of July and it will end on the 4th of September. Yeah, so that's it. What is the likely outcome of discussions with Nexo and what will it mean for creditors? So it's a little too soon for me to communicate explicitly what it means for creditors, but I can tell you what the Vault team wants. The Vault team really wants to resume deposits, withdrawals, and trading, draw out a scheme or a withdrawal schedule, if I may, and make our customers whole. Right? That's the deal we're pushing for. No haircut, none of that stuff. Now it's a function of getting there is a function of ensuring that we've been fully transparent with Nexo or any other potential investor, but more importantly, ensuring that the future looks very promising for the business that they're investing in. So it's going to be a combination of seeing where we are and in turn drawing up the future plans once we're deeply integrated, or rather deeply working with the Nexo leadership. So the deal we're pushing for is resuming deposits, withdrawals, and trading sooner rather than later, drawing up some sort of schedule of withdrawals, and ideally no haircut situation. But we don't have the definitives yet. So we will further communicate with you as soon as we have definitive documents on what this would mean for you as a creditor. Will Vault engage in discussions with other potentially interested parties? We signed an exclusive due diligence timeline with Nexo. So we're going to see the Nexo transaction through. We want to complete a transaction with them and are optimistic. If there is an offer that makes our creditors whole, I can tell you very comfortably on this call, we're going to be extremely, extremely inclined to take it. Primarily because A, we don't have to spend more time in uncertainty. B, we know we're taking care of our customers, and that's 100% what we prioritize at this point. Not our preferred shareholders, not the founders, not anybody else. Our 100% focus is to do right by our customers. So if that's the deal we get, we're taking it. Yeah, I've been